Hello students, welcome to your channel. Please like, share and subscribe your own channel, School Studies. School Studies is pleased to announce the launch of our educational website, Patel Section. After years of hard work and dedication, we are delighted to officially announce the launch. Our goal with this website is to provide our students with an easier way to learn their lesson and prepare for exams. The new website is interactive and gives better access to NCERT Solution, GSEB Solution, Kids Zone and General Knowledge courses and quiz. We will be constantly updating our content with helpful information, articles, blogs, newsletters and new course announcements. Today we will see a video related to NCERT Solution for Class 9 Social Science, History, Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler. Let's solve textbook exercise. Describe the problems faced by the Weimar Republic. The defeat of Imperial Germany at the hands of the Allied power in World War I led to the abdications of the Emperor Wilhelm II. This gave an opportunity to parliamentary parties to recast the German polity. Thus, a National Assembly met at the town of Weimar to form a republic with a democratic constitution and the federal structure. But this newborn republic was not well received by its own people for the following reasons. The Allied imposed a harsh and humiliating treaty at Versailles, which squarely placed the blame of starting World War I on Germany's shoulder. It was the Weimar Republic that signed the treaty, much to the displeasure of the German populace. Germany lost all of its overseas colonies and the tenth of its population, along with 75% of its iron and 26% of the coal. France, Poland, Denmark, and Lithuania. The World Guild Clause held Germany responsible for the war and the subsequent damage it caused in the Allied nations. They were forced to pay compensation of £6 billion in total. Due to the loss of most of its revenue generating colonies, Germany was unable to repay the amount. Due to the failure of pay compensation, the Allied armies occupied the resource-rich Rhineland for a time. The Weimar Republic reacted to this by printing paper currencies in large numbers to pay off the huge debt. This led to the high inflation and the eventual collapse of the economy. Coupled with the humiliations of foreign power occupying German territory and economic collapse, the German public held the new Weimar Republic responsible for the defeat in World War I and accepting the disgrace at Versailles. Okay, so the defeat हुए थे Germany in the hands of Allied power. World War I के अंदर उनके जो एम्परर थे विल्हेम II वो इस वर्ल्ड वॉर वन में डिफीट हो गए थे. इसके बाद में जो है अपॉर्चुनिटी मिली जर्मन को कि वो पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है फॉर्म कर सके. नेशनल असेंबली जो है मिले थे टाउन वाइमार में ताकि वो रिपब्लिक फॉर्म कर सके विद डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल स्ट्रक्चर्स के साथ में. बट ये न्यू बॉर्न रिपब्लिक जो था वो वेल रिसीव्ड नहीं था उनके ही लोगों से. ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते थे कि वो न्यूबॉर्न रिपब्लिक बने. द अलाइड इम्पोज, जो अलाइड पावर थे उन्हें इम्पोज किए थे हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी और उन्हें ब्लेम किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन ऑन जर्मनी शोल्डर. और वाइमार रिपब्लिक ने साइन किया था ये ट्रीटी जिसकी वजह से लोग जो है डिसप्लेजर थे. जर्मनी ने लॉस्ट किया था ओवरसी कॉलोनीज और 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 75% आयरन, 26% कोल. ये सब उन्होंने लॉस कर दिया था किसको? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया को. जो वॉर गिल्ट क्लॉज थे जर्मनी के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द वॉर और सब्सिक्वेंट डैमेज हुआ था इट इज कॉज्ड इन द अलाइड नेशंस और उनको फोर्स किया गया था टू पे कंपेंसेशन ऑफ £6 बिलियन इन टोटल. और उनने अपनी रेवेन्यू जनरेटिंग कॉलोनीज जो है लॉस कर दी थी और जर्मनी जो है ये लोन जो रीपे अमाउंट, ये जो कंपेंसेशन अमाउंट था वो रीपे नहीं कर पा रहा था. और ड्यू टू द फेलियर ऑफ दिस रीपे कंपेंसेशन द अलाइड आर्मी उनने जो है
ऑक्यूपाइड कर लिया था उनके रिसोर्स रिच राइन लैंड को। वाइमार रिपब्लिक जो है उन्हें रिएक्ट किया था, उन्हें प्रिंटिंग पेपर करेंसीज बनाए इतने सारे कि ह्यूज डेप्थ वो पे कर सके, जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन हो गया था और कोलैप्स हो गई थी इकोनॉमी। काफी ह्यूमिलेशन क्रिएट हो गया था फॉरेन पावर्स और जर्मनी टेरिटरीज, और इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई थी। जर्मन रिपब्लिक हेल्ड द न्यू वाइमार रिपब्लिक, ये सबके लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल माना था वाइमार रिपब्लिक को। Second question, discuss why Nazism becomes popular in Germany by 1930. So the end of World War I had changed the political landscape of Germany. Right from the beginning, the infant Weimar Republic was beset by problems. The harsh Versailles Treaty was a serious blow to the national prestige of the Germans and to the economy. The economic situation was worsened by the Great Depression of 1929, which had severely affected the already fragile German economy. The inability of the Weimar Republic to remedy the situation only further inflamed public sentiments. The political scenario was not any better as the various political factions, such as the communist and the socialist, fought with each other that stalled any policy that will uplift the filth of the German people. It was in his background that Hitler would organize the fledgling National Socialist German Workers' Party, otherwise none of the Nazi Party, into a mass movement. By implementing Nazi ideals, Hitler promised to undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people, promising economic security and to build a strong German nation free from all foreign influences and conspiracies. He found strong support among the German middle class, who were threatened with destitutions due to the economic collapse that had shut down banks, businesses, and factories. Nazi propaganda, along with Hitler's powerful oratory skills, successfully portrayed Hitler as a savior and Nazism as the means to deliver the German people from the distress of living in a time of acute economic and political crisis. नाउ जो एंड हुआ था वर्ल्ड वॉर वन का, उसके बाद में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो था जर्मनी का वो चेंज हो गया था। ठीक है, राइट अगर देखें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इन्फेंट वाइमार रिपब्लिक से, तब से ही पूरा की पूरा जो सिनेरियो है जर्मनी का वो चेंज हो गया था। उसके अंदर क्या थे प्रॉब्लम्स, तो जो हार्श वर्साइलेस ट्रीटी जो एक सीरियस ब्लो था और उसकी वजह से नेशनल प्रेस्टीज जो जर्मन का था वो लॉस्ट हो गया था। इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बहुत वर्स्ट हो गई थी ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद से, जिसमें जर्मन को काफ़ी अफेक्ट हुआ था। जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो बेटर नहीं था। वेरियस पॉलिटिकल फैक्शंस थे, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एक दूसरे के हाथ में जो है फाइट करने लग गए थे। और ये बैकग्राउंड, इट वाज इन दिस बैकग्राउंड दैट हिटलर ने जो है ऑर्गेनाइज किया फ्रेडली नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको जो है बोला गया था नाजी पार्टी विद द मास मूवमेंट। और हिटलर ने प्रॉमिस्ड किया था टू गिव अंडू द इनजस्टिस, जो इनजस्टिस हुआ है, और जर्मन पीपल को अपनी डिग्निटी वापस दिला के रहेंगे और जर्मन को एक फ्री नेशन बनाएंगे फ्रॉम ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्पिरेसीज। जो जर्मन मिडिल क्लास के लोग थे काफ़ी सपोर्ट करते थे उनको, हिटलर को, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी कोलैप्स हो गई थी, जिसकी वजह से जो बैंक्स, बिजनेसेस और फैक्ट्रीज बंद हो गए थे। नाजी प्रोपेगेंडा अलॉन्ग विद हिटलर्स पावरफुल स्किल जो है एक वापस से पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है एंड हुए और जर्मन पीपल जो है डिस्ट्रेस ऑफ लिविंग इन द फ्री नेशन, दे हैव स्टार्टेड ड्रीमिंग दैट। थर्ड, व्हाट आर द peculiar features of Nazi thinking? The Nazi thinking was synonymous with Hitler's worldview. The features of such thinking are as follow. There was no equality among the human race, only a racial hierarchy
with the bonded blue-eyed Nordic German Aryans being at the top and the Jew being placed at the bottom level. All the other colored people are placed somewhere in between, depending on their external features. The other aspects of Nazi ideology was the concept of Leban- Lebanese or living space. It was believed that new territories had to be acquired at the expense of the local population in order to enhance material resources and the power of the German nation. They believed in the survival of the fittest, which was a twisted version of Darwin's theory about natural selection. In their version, they believed that the strongest race will survive while the weak will perish. Nazi thinking put much emphasis on racial purity. This meant that anyone born with a physical and mental disability was considered undesirable and impure. Allowing their existence now would only pollute the German race, and hence they had no right to exist. Along with Jews, Gyps- Gypsies, Slavic, and blacks were all considered subhuman and executed in large numbers under the shadow of World War II. Nazis believed in war and aggression. Any notion of peace or related ideologies were considered weak by the standards. They believed the world dominations through war justified in proving the superiority of the German race. अभी जो नाजी की थिंकिंग थी वो सेम जो है हिटलर की वर्ल्ड व्यू थिंकिंग थी उसकी जैसे थी जो थिंकिंग थी वो कैसे थी तो कोई भी इक्वल नहीं है इन द ह्यूमन रेस जो है हेरार्ची पे डिपेंडेंट है सबसे ऊपर जो है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस आते हैं और सबसे टॉप पे ज्यूज आते हैं ठीक है कलर्ड और बाकी के जो कलर्ड पीपल है वो इन बिटवीन देम आते हैं इन डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सटर्नल फीचर्स नाजी आइडियोलॉजी जो है वो लिविंग स्पेस पे पूरे की पूरी कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट था वो बिलीव करते कि न्यू टेरिटरीज एक्वायर्ड करे ऑन एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन जो लोकल पॉपुलेशन है उसके बेस पे जो है वो नई नई टेरिटरीज जो है एक्वायर्ड करें जो बिलीव करते थे इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करता है चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की वो उस पे उनका एक ट्विस्टेड वर्जन वो लेकर आए थे ठीक है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो ही रेस में सर्वाइव करेगा जो वीक है वो रेस में सर्वाइव नहीं करेगा दैट इज देयर थिंकिंग नाजी जो थिंक करते कि रेशियल प्योरिटी मीन्स जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है वो अनडिजायरेबल और इनप्योर है वो एग्जिस्ट नहीं करते नाजिस बिलीव करते इन वॉर एंड एग्रेशन ठीक है पीस रिलेटेड आइडियोलॉजीज और वो सब वीक स्टैंडर्ड्स के लिए वो उनके लिए नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यूज The Nazis were quite effective in using propaganda to great effect. They made propaganda films to fan hatred for Jews, with the most infamous being the external Jew. Orthodox Jews were stereotyped and marked. They were sown with flowing beards, wearing kaftans, and were referred to as a rats and vermins who fed off from good Germans. Jews were also blamed for Germany's defeat in World War I, despite the fact that the large number of their with distinctions in the conflict. The propaganda by the Nazis effectively worked on the mind of the people, making use of the centuries of anti Semitic feelings and tapping their emotions. This turned their hatred and anger at those who were blamed for all of Germany's past and present ills, and the Nazis will be the remedy for these ills. ओके नाजीज जो है क्वाइट इफेक्टिव थे उनके प्रोपोगेंडा में काफ़ी इफेक्ट हुआ था वो प्रोपोगेंडा फिल्म्स बनाते थे ताकि वो हेट करे ज्यूज को और जो कि मोस्ट इनफेमस बीन द एक्सटर्नल ज्यू ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो है स्टेरियोटाइप मारते थे और मानते थे उन लोग को वो बियर्ड
वियरिंग कैफ्टन और रैट्स ऐसे रेफर्ड करते थे। ठीक है, वो ब्लेम करते थे कि उनकी वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को डिफीट मिला है, जबकि इनफैक्ट द फैक्ट ये है कि लार्ज नंबर ऑफ ज्यूज जो है सर्व्ड हुए थे इन द कॉन्फ्लिक्ट। अब प्रोपेगेंडा ऑफ नाजीज इफेक्टिवली, उनने बहुत लोगों के माइंड पे इफेक्टिवली वर्क किया और सेंचुरीज तक जो है ये फीलिंग्स और टैपिंग्स जो है, इमोशंस टैपिंग्स जो है चलती रही और लोग जो है हेट करते रहे ज्यूज को और ब्लेम्ड करते रहे जर्मनीज के पास व प्रेजेंट इल्स को, जबकि जर्मनीज के पास व प्रेजेंट इल्स जो है नाजिस थे। Next, explain the role of women in Nazi society. Return to chapter 1 on the French Revolution. Write a paragraph comparing and contrasting the role of women in the two periods. Women in Nazi society were relegated to housewives who were charged with upholding the honor of the German race by limiting contacts with undesirables and raising as many pure-blooded children as possible. Those who conformed to this rule were given favored treatment in hospitals, concessions in shops, theater tickets, and railway fares. Despite Hitler's statement on women being the most important citizen, it did not apply to every woman, especially to those deviated from Nazi ideology. Those that did risked public humiliation, loss of civic honor, loss of family, jail sentence, and even death. This was in total contrast to the role of women in the French Revolution, where women led movements and fought for the right to education and the right to equal wages as men. They could not be forced to marry against their will. They were also trained for jobs, become artists, or run small businesses. Schooling was made compulsory for them, and they could even hold property. ओके, सो द वुमेन्स की जो स्टेटस था नाजी सोसाइटी में, वो सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए था, वो सिर्फ हाउसवाइफ्स थे और उनकी जो अपहोल्डिंग द ऑनर, जर्मन रेस के अंदर उनकी लिमिटेड ऑनर्स थे, अनडिजायरेबल्स थे और सिर्फ चिल्ड्रंस बॉर्न करने के लिए ही वो पॉसिबल, मतलब उतना ही उनका काम था। उनका जो रोल था, अगर उन्हें ये रोल में अगर वो सक्सेड है तो उनको फेवर्ड किया जाता था, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था हॉस्पिटल में, कंसेशन शॉप्स में, थिएटर टिकट्स, रेलवे फेयर्स। पर अगर नहीं मानते थे तो जो है उनको काफ़ी ह्यूमिलेट किया जाता था, उनका ऑनर लॉस ऑफ सिविक ऑनर होता था, उनको फैमिली खो देते थे वो लोग, उनको सेंटेंस टू जेल हो जाता था, इवन उनको डेथ। जो हिटलर का स्टेटमेंट था वुमेन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, वो अप्लाई हर वुमेन्स के लिए नहीं था जर्मनी में। और जबकि देखा जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है वुमेन्स ने मूवमेंट स्टार्ट किए थे, फॉट किया था अगेंस्ट द राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल वेजेस एज मैन। उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता था उनके अगेंस्ट मैरी करने के लिए। वो जो है ट्रेन किए जाते थे उनको जॉब्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, और स्मॉल बिजनेस जो है वो रन कर सकते थे। स्कूलिंग जो है उनके लिए कंपलसरी था उस टाइम पे, और वो खुद एक प्रॉपर्टी होल्ड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल? प्रेसिडेंट ऑफ द Weimar Republic, Paul von Hindenburg, made Hitler the challenger of Germany. Shortly after, a mysterious fire broke out in the Reichstag, the parliament building of Germany. Blaming the act of arson on communists and other enemy of the state, Hitler passed the first fire decrees in 1933, which suspended the civic rights like freedom of speech, press, and freedom of assembly. Thus, Hitler effectively started controlling the German population. Other measures he took understood by systematically dismantled democracy in Germany, where the Enabling Act was passed, which gave all powers to Hitler to sideline the parliament and rule by degrees. All political parties with the expectations of the Nazi party were banned.
The members of this band parties were either imprisoned, exiled, or assassinated. The communists were eradicated, with the remaining members being sentenced to concentration camps. Special security forces such as the SASSSD and Gestapo were created to control and order society in ways the Nazis wanted. These organizations were given extrajudicial powers. In school, children were taught to be loyal and submissive. They were also taught to hate Jew and worship Hitler, thus cultivating a personality cult in the progress. Nazi youth organizations, the like Jugblog and Hitler Youth, were created, where the youth were taught to hate democracy, communism, Jew, and other undesirables. So these are the way जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि नाजी कैसे कंट्रोल करते थे ऑन जर्मनी. सो द प्रेसिडेंट जो थे वेमर रिपब्लिक के, उनने जो हिटलर को एक एज अ चांसलर बनाया जर्मनी का. बट शॉर्टली आफ्टर द मिस्टीरियस फायर जो ब्रोकआउट हुआ था पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स पे ऑफ जर्मनी, उसकी वजह से जो है हिटलर ने पास किया जो फर्स्ट फायर डिक्रीज 1933 में, और उसने सस्पेंडेड किया अपने सिविक राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली. ये सब उनने सस्पेंड कर दिए. और बहुत सारे ऐसे जर्मन उनने मेजर्स लिए, जैसे अनेबलिंग एक्ट जो है पास किया गया था, जिसके अंदर सारे पावर्स जो हिटलर्स को दिए गए. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्सेप्ट जो नाजी पार्टी, सबके सब बैन कर दिए गए. कम्युनिस्ट को इरेडिकेट किया और रिमेनिंग मेंबर्स को जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया. स्पेशल सिक्योरिटी जैसे SASSSD एंड गेस्टापो, वो सब क्रिएट किए टू कंट्रोल एंड अदर ऑर्डर सोसाइटी. स्कूल्स में चिल्ड्रंस को जो है सिखाया जाता था टू बी रॉयल एंड सबमिसिव, और उनको सिखाया जाता था टू हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. ठीक है. यूथ ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज किए गए ताकि यूथ को जो है सिखाया जाए टू हेट डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, ज्यूज एंड अदर अनडिजायरेबल्स. So this was chapter 3 of NCERT Solution for class 9th history. I hope you liked my video. Thanks for watching my video. Thank you. Please leave comment, question or doubts in comment section if you have any, or you can drop a mail to us. You will find my email ID at the end of this video. You can also join us on Facebook page, follow us on Instagram, connect us on LinkedIn or tweet us on Twitter. Thanks for watching my video. Thank you.